Hello, my dear students and all the learners of English. Welcome to our channel. And you know that you are always welcome to the Panda speaking English. In our classes, our motto is to how to speak English fluently without making any mistakes. आपण माननको इंग्राजी शिखाइबा होची आमर उद्देश्य आमर चैनल टी को आपण देखुचंती. नेक्स्ट वी हैव टू डील विथ टुडेज टॉपिक इज द वर्ब गेट. गेट वर्ब को लगाई करी आमे किपरि विभिन्न प्रकार रो सेंटेंस कहि परिबा एवं लेखि परिबा भी. गेट एज वर्ब. Yes, let us come to the slide. Once again, welcome to Panda speaking English. So today's class is get. Get has many meanings. Get as a verb has many meanings, and we have to frame so many meaningful sentences. Those sentences are very useful in our daily talking. We learn those type of sentences. Please pay attention towards the lesson and try to understand all the meanings using the verb get. So let us come to the slide. Look at the slide very carefully. What presents did you get for your birthday? What presents did you get for your birthday? Here get means obtain or receive. Get means you can know that obtain, receive, buy, earn, understand. There are so many meanings are there. The get verb has. तो जन्मदिन पाई तू कि उपहार पाइलु. What presents did you get for your birthday? Number 2, he gets rupees 4 lakh a year. He gets rupees 4 lakh a year. Here gets means earn. Earn रोजगार करिबा. केते टंका वर्षक से 4 लाख टंका रोजगार करे. This room does not get sunshine. That means this room does not get sunshine. ओडिया रे कोन हबो? ओडिया रे एटा कम किमती बुझिबो. मु कहली रिपीट अगेन. This room does not get sunshine. ए घरे सूर्यालोक पड़े नाही. माने इट इज डार्क रूम. 4, where did you get this shawl? Where did you get this shawl means where did you get these shoes? Where did you get this camera? That means buy. Get means your buy. 5, I am getting sleepy. I am getting sleepy. मोते निद लागुछि. I am getting sleepy. You can also say I feel asleep. How much did you get for your car? प्रश्न आपण पचारुछन्ती जनको. हाउ मच डिड यू गेट फॉर योर कार, फॉर योर कैमेरा, फॉर योर मोबाइल फोन एटसेट्रा. गोटे जिनस रो दाम केते. केते टंका रे तुम कार बिकिल. एटा बिकिल. हाउ मच डिड यू गेट फॉर योर कार माने सेल. ए जगह रे SELL सेल बिकिल. केते टंका रे तुम कार को बिकिल. सानिया मिर्जा गॉट सिल्वर मेडल. सानिया मिर्जा रौप्य पदक जिणिले. ए जगह रे गॉड रो अर्थ ऑप्टेन नुह. गॉड रो अर्थ ए जगह रे विन बा ओन. सानिया मिर्जा गॉट सिल्वर मेडल. प्लीज लुक एट द also the pictures. Those are shown in the slide. She has just got a government job. She has just got a government job. से ठीक एबे गोटे सरकारी कामटी पाइछि. जस्ट एबे सरकारी कामटी पाइछि. She has been appointed to a government job. Go and get the dictionary. We will look a word up. Look up words. Dictionary रे शब्द खोजी बाहर करिवा. Look up. UP. LOOK UP. That means अभिधान जाओ अभिधान टी को आनो. आमे गोटे शब्द देखिबा. He got 5 years. Simply you say he got 5 years. Meaning he got 5 years रो अर्थ से 5 वर्ष जेल दंड पाइला.
ए जगह आपण मैंने कहबे नहीं जे ही गेट 5 years इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट दरकार नहीं दैट मीन्स ही वाज सेंटेंस टू 5 years in prison he was sentenced to 5 years in prison that means imprisonment he got 5 years ओडिया रे आ गोटे सेंटेंस कहा जाउची 11 मार्क दी सीरियल नंबर 11 से बस यात्रा कले तार मुंड व्यथा हुए बस यात्रा कले तार मुंड व्यथा हुए दैट मीन्स कौन हेबो इफ सी ट्रावेल्स बाय बस सी गेट्स बैड हेडेक आउ थरे सुनि नियंतु इफ सी ट्रावेल्स बाय बस सी गेट्स बैड हेडेक serial number 12 he got a bullet in his thigh look at this slide in slide also we have already displayed you for your better understand slide रे भी भलो भाई बुझिबा पई slide शो करा जाई छी he got a bullet in his thigh तार जंघरे गोटे गुली लागिथिला सेंटेंस नंबर 13 भोक लागिले खाद्य खाइबो भोक लगे खाद्य खाइब इफ यू गेट हंग्री ये भी गेट आसूँ देखु गेट हंग्री इफ यू गेट हंग्री यू विल इट फुट ए जगह गेट अर्थ फील आपण मैंने कही पारे इफ यू फील हंग्री यू विल इट फुट 14 तुमे सेठारे केते बेले पहुँचिल पहुँचवा इंग्राजी रे गोटे स्थान को पहुँचवा अर्थ रे आपण गेट लगे पारे जार अर्थ कि अराइव पहुँचवा अराइव बा रीच व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर यू कैन ऑल्सो से व्हाट टाइम डिड यू अराइव देयर व्हाट टाइम डिड यू रीच देयर किंतु भलो इंग्राजी आपण कहबा पई चाहिए व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर इट इज गेटिंग डार्कर लेट अस गो होम इट इज गेटिंग डार्कर अर्थ कौन आपण माने बुझी पारुथिबे इट इज गेटिंग डार्कर अर्थ है अंधार हो आसुची अंधार हो आसुची लेट अस गो होम चलो घर को जीवा सी इज ग्रेजुअली गेटिंग बेटर आफ्टर क्योर फ्रॉम मलेरिया देखंतु माने से ग्रेजुअली गेटिंग बेटर सुस्थ जड़े होची जड़े सुस्थ होची सीटा मध्य गेट लागुची मलेरिया छाड़िबा परे से धीरे धीरे सुस्थ होउछंती माने सी इज ग्रेजुअली गेटिंग बेटर आफ्टर क्योर फ्रॉम मलेरिया 17 यू विल गेट वेट इफ यू गो आउट इन द रेन मार्क द स्लाइड द पिक्चर आर शोन यू विल गेट वेट इफ यू गो आउट इन द रेन मीनिंग आपण टिके अनुमान कले बुझी पारिबे यार अर्थ कौन माने वर्षा रे बाहर को गले इफ यू गो आउट इन द रेन माने वर्षा रे बाहर को गले तुमे ओदा होई जीव यू विल गेट वेट WET वेट और यू विल गेट ड्रेंच DRENCH ड्रेंच कहले भी हबो शीत ऋतु रे विवाह होबा पई से माने स्थिर कले दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड इन द विंटर गेट मैरिड विवाह हेबा गेट मैरी डिसाइडेड टू मैरी भी हेबो आपण MARRY मैरी भार को मध्य सीधा सड़क एठी लगै परिबा दे डिसाइडेड टू मैरी MARRY दे डिसाइडेड टू मैरी इन द विंटर बट डोंट से लाइक दैट दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड इन द विंटर 19 he got a fine for driving fast he got a fine for driving fast द्रुत गति रे गाड़ी चलाउथिबारु तांको जरिमाना करागला देखंतु किमती होउछि माने ए जगह रे आगरु आमे पढ़ितिला जे जेल दंड पाइबा ही गॉट 5 years जेल दंडा देश रे भी गॉट लगा होउछि फाइन जरिमाना पाइबारे मध्य गेट गॉट लगा होउछि मार्क करंतु मने रखंतु ही गॉट ए फाइन फॉर ड्राइविंग फास्ट or for driving too quickly, too speedily. 20. Get me a glass of water. Get me a glass of water means don't say give me a glass of water.
give me a glass of water. That is poor English. You should say get me a glass of water means fetch me a glass of water. Then go and bring a glass of water for me. Okay. Let us get a taxi. Let us get a taxi means take. ये जगह let us get और अर्थ जगह take. That means let us hire a taxi. Let us hire a taxi. I shall get back to home. I shall get back to home. Get back रो अर्थ जगह come back. That means return. I did not get what he said. এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ. I did not get what he said. ଏ ଜାଗାରେ getର ଅର୍ଥ ହେଲା understand. ଆପଣ କହିପାରିବେ I did not understand what he said. Same meaning. I did not make out what he said. Same meaning. Make outଟା ହେଲା ଗୋଟେ phrasal verb. Make out ମାନେ ବୁଝିବା, understand ମାନେ ବୁଝିବା, ଏ ଜାଗାରେ get ମାନେ ବି ବୁଝିବା. Okay? Then in this sense we also can use get plus adjective. Our next thing is the get plus adjective. Get को आमे लगे कि adjective मध्य fixed करी परिबा get सांगरे meaning अलगा है जिबो. जिमती get angry रागी जिबा, get worried चिंता करिबा, get bored or get on annoyed विरक्त हेबा जाना कहा कहूँ. मोटा हेबा get nervous. मोटा है जिबा get fat. पतला है जिबा get thinner or get thin. पागल है जिबा get mad, get dark, get divorced. आमे कहूँ धरन्तु कहबा जे I am getting older. I am getting elder. I am getting tired. So get tired, get angry, get older, get annoyed, get bored. It is getting hotter. It is getting colder. देखो गेट रे केते प्रकार लाउची गेट प्लस एडजेक्टिव रे आमे विभिन्न प्रकार रे आमे ए संबंध रे आमे कहि परिबा. किंतु मन रखन्तु गोटे कथा जे गेट कैनॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. गेट को केते बेले भी आपण पैसिव वॉइस रे कहवा पई चेष्टा करिबा नाही. काहे कि गेट कैनॉट बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. यस दिस मच गेट बहुत कहगला माने गेट संबंध रे आपण डिटेल आपण जानि पकैले जेति कि हमर दरकार कन्वर्सेशन रे गेट को लगै करी. So we use in several ways the verb get. Yes, thank you so much for watching the video and learning the English. Thank you so much.